In this lecture, we will talk about qualitative properties of solution of second order equations, and this is known as Sturm theory, given by French mathematician Jacques Sturm. So we have studied earlier that Wronskian play an important role, and we studied examples of linearly independent solution for constant coefficient equations. But here you can we will see that Wronskian also play an important role to study the variable coefficient equations. So for instance, we take this equation, but now p coefficient, this is not a constant, this is a function of x. And similarly, q is also a function of x. So we have second order variable coefficient equation. And you know that for each possibility of p and q, you cannot solve all equations. There is no general theory for variable coefficient equations. And in qualitative properties, we don't try to find solutions, but we will talk about properties of solutions. And for example, and you can also compare two equations. For example, I have equation this constant coefficient, and I know that this equation has two solutions, cos x, and another one is sine of x. And let us take variable coefficient equation. So this is called Airy equation. So it looks like this equation, so but this is variable coefficient. And you know that if you draw solution, तो पहले का ग्राफ कैसे बनेगा, जैसे एक फंक्शन sin x है, एक cos है, तो cos will be like this, okay, and so on. दूसरा solution आपका है sin x, तो sin 0, sin x का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे, ठीक है. तो इसका मीनिंग है कि if I see cos x, so cos x vanishes at these points, let us say minus pi by 2 to plus pi by 2. So in other words, one solution has two roots. दो रूट है ना इसके, अगर इनकी बात करें, और भी बहुत सारे हैं, there are many root, but I am talking about this branch only. And in these two roots, sin x has one root. So in other words, if one solution vanishes at 2 point, then another solution also vanishes in between at 1 point. अब इसी को देख के अगर आप if you try to solve this equation or try to talk about behavior of solution, then can you say that this equation also has some same kind of solutions which vanishes, कि इसका solution जो भी होगा आपका, मान लो ये solution है, एक solution ये है, दूसरा solution कुछ ये है, तो अगर एक solution इसके दो रूट हैं, तो क्या उसके बीच में दूसरे solution का वन रूट होगा,
Okay, so in this Sturm theory, we talk about behavior of solutions of variable coefficient equations, and we will develop a theory which says that कि एक इक्वेशन सिंपल है आपके पास, क्या आप सिंपल इक्वेशन को देख के कैन यू मेक सम प्रेडिक्शन अबाउट वेरिएबल कोएफिशिएंट इक्वेशन, एंड दिस theory is known as Sturm theory. So there are very nice results in this area. So first result I am going to prove with this is known as, so proofs are very small, they are not big. They depend on properties of functions. अब ये जो स्टडी है ये फंक्शन की प्रॉपर्टी पे है कि कोई फंक्शन इंक्रीज करेगा तो कैसा होगा, डिक्रीज करेगा कैसा होगा. जैसे मैं कहूँ ना कि फंक्शन वैनिश हो रहा है, मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लो कि दो रूट हैं उसके, लेट अस से दिस, तो इसका मीनिंग क्या होगा? अगर दो रूट हैं, या तो ऐसा होगा या फिर फंक्शन ऐसा होगा, या तो पॉजिटिव होगा या पूरे का पूरा नेगेटिव होगा, नहीं? और अगर ऐसा है, दो दो रूट हैं तो फंक्शन पहले इंक्रीज करेगा उसके बाद डिक्रीज करेगा, यहाँ ऐसा होगा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, तभी तभी दो रूट आएंगे ना, इंक्रीज टू डिक्रीज या डिक्रीज टू इंक्रीज चेंज होगा. एंड then you can, if function is increasing, then you can say something about its derivative. कैसा होगा डेरिवेटिव? If a function is increasing, then derivative, बोलो भाई. पूरे डोमेन पे ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा. Okay, जी. so you can say something about its derivative. If function is increasing, then if f is increasing, then f dash x will be positive. Okay, तो बेसिक फंक्शंस की प्रॉपर्टी हैं, उन्हीं पे ये रिजल्ट मोरलेस, these results are based on those property. So first theorem in this direction is Sturm separation theorem. So this theorem says that let y1, so we have two solutions which are denoted by y1 and y2. Are two solutions of, or you can say two fundamental solution or two linearly independent solutions. Of this equation. Okay, then the zeros of solutions y1 and y2 are distinct and occur alternatively. So this is the same, जैसे मैंने cos और sin का एग्जांपल लिया था,
जिस पॉइंट पे कॉस वैनिश होगा उस पे साइन नहीं होगा, और जिस पे साइन जीरो है उस पे कॉस जीरो नहीं बनेगा. सो देन जीरो जो सॉल्यूशंस, they are distinct and they occur alternatively, that we need to prove. So first we write the given information. Let y1 and y2 are fundamental set of solutions or linearly independent solutions, are two linearly independent solutions of second order equation. Okay, so we will assume two conjunctive zero of one solution. So let x1 and x2 are two conjunctive zeros of one solution, say y1. Sir, please show the previous slide once. So let us assume that we have two zeros of one solution, say y of 1, and we prove the result by contradiction. Let us assume that or write it in short. On contrary, let us assume that y2 does not have a zero in x1, x2. So let us say we have this interval x1, x2, and these 2 points are roots of, तो जो भी आपका solution होगा, let us say y1. So y1 vanishes at 2 points x1 and x2. Okay. Uh, Let us assume that y2 does not have a zero in x1, x2. Thus, y2 does not have a zero in x1, x2, as y1 and y2 are linearly independent. अब एक तो मैंने ये एज्यूम किया कि इस इंटरवल के अंदर y2 का कोई जीरो नहीं है. फिर मैंने अगला जो पॉइंट लिखा है कि y2 का जीरो इन पॉइंट्स पे नहीं हो सकता x1, x2 पे, बिकॉज दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट. वाई? अगर ऐसा हो तो क्या होगा? क्या हो जाएगा फिर? क्योंकि y1 इस पे जीरो है, x2 पे भी जीरो है, और अगर y2 भी इन पे जीरो हो, y2 x1 पे और y2 x2 पे भी अगर जीरो बन जाए, तो रॉन्स्कियन क्या होगा? y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश. रॉन्स्कियन इन पॉइंट पे कंप्यूट करोगे x1 x2 पे तो जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये भी जीरो है, ये भी जीरो है x1 या x2 पे.
तो हमने ये पढ़ा था अगर फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है सो रॉन्स्कियन विल बी नॉन जीरो। और अगर अगर एक पॉइंट पे लेट अस से रॉन्स्कियन इज जीरो एट x1 then it is zero everywhere. Okay, so due to linear independence y2 cannot vanish at x1 and at x2 and we have assumed that हमने प्रूव क्या करना है कि जो y2 है that will vanish here somewhere in between, but I have assumed that Wronskian is not vanishing in between. Okay, so now a contradiction, and you can write a contradiction as Wronskian of y1 and y2 at any point that is non-zero. So since I am assuming that y2 is not vanishing in that interval, so y2 is non-zero, so then define I am defining a new function which is a ratio of y1 and y2. Since y2 is non-zero, so I can define it. ठीक है? Now differentiate it. So I got y1 dash y2 minus y1 y2 prime divided by y2 square. अंडरस्टूड है ठीक है, x में स्किप कर रहा हूँ, सो दे आर फंक्शन ऑफ x। तो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, दैट इज रॉन्स्कियन, नेगेटिव ऑफ रॉन्स्कियन y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम, सो दिस इज रॉन्स्कियन डिवाइड बाय y2 स्क्वायर। now y1 and y2 they are solution. This function is well defined. So phi is a continuous function on this interval x1 x2 and its derivative also exists. Derivative is also well defined, and if you fit x equal to x1 then phi x1 क्योंकि y1 जीरो है तो phi x1 जीरो है, phi x2 जीरो है। A function is continuous, derivative exists in that interval, and phi x1 equal to phi x2 equals to 0, then I can apply Rolle's theorem. लगा सकते हैं ना Rolle's theorem? What Rolle's theorem say? There exists a point C so that phi dash C will be 0. यही कहती है Rolle's theorem. So therefore phi is continuous on closed interval x1 x2, derivative exists at least on open interval x1 x2, and phi x1 equals to phi of x2 equals to 0. Then by Rolle's theorem there exists a point C in open interval x1 and x2 so that phi dash C equals to 0. अब phi dash C क्या होगा, just go back, what is phi dash C? This is minus Wronskian
y1 y2 at C divided by y2 square at point C. This is equals to 0. So this means Wronskian of y1 and y2 at C, और C x1 और x2 के बीच में पॉइंट है. So Wronskian is vanishing. Again a contradiction. As y1 and y2 they are linearly independent. So Wronskian cannot vanish at one point. If it vanishes at one point, then it will vanishes at all points. Okay. तो contradiction है. So therefore y2 has at least one zero on interval x1 and x2. So Rolle theorem says that your function has at least one zero. But हमने शो क्या करना है? At most one zero. तो इस आर्गुमेंट को रिपीट कर दो. We claim that y2 does not have more than one zeros on interval x1 and x2. If this is not true, then there are 2 points, there are at least 2 points say x3 and x4 where y2 vanishes. So I am assuming that this is my x1, this is my x2, and I have two conjunctive points x3 and x4, and these two are zeros of y2. Okay. अब आपने previous argument लगाना है. Then Sir, what is this claim written? We claim that y2 does not have more than one zero. हमने कह दिया ना at least one zero है, but हम क्या शो कर रहे हैं? y2 does not have more than, यानी कि एक ही रूट है उसका. अब जो आप रोल थ्योरम में आप सी कहते हो ना, तो वो कहता है कि देयर इज जस्ट ए पॉइंट, है ना, at which this vanishes. बट एक से ज्यादा भी तो हो सकते हैं. तो अभी हमने ये शो किया कि y1 और y2 के जो दो रूट हैं उनके बीच में y2 का एक रूट जरूर होगा. और आगे हमने ये शो करना है कि वो एट मोस्ट एक ही होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा. So on the contrary, I have assumed that y2 has two roots, x3 and x4. तो y2 इन दो पॉइंट्स पे जीरो बन जाएगा. So then by previous arguments, y1, अब x3 अब इनका रोल स्वाइप कर दो ना. अब कोई
अब जब शुरू में हमने लिया था कि y1 के 2 रूट हैं तो उसके बीच में दूसरे सोल्यूशन के एटलीस्ट 1 रूट होगा। तो अब मैं उस आर्गुमेंट को रिवर्स कर रहा हूँ। तो y2 के 2 रूट हैं, एक सोल्यूशन के 2 रूट हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? अगर सेम आर्गुमेंट आप रिपीट करोगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसके बीच में y1 का भी एक रूट होगा। ठीक है, बट हमने क्या अज्यूम किया है अब कि दो कंजक्टिव जीरोज हैं, so y1 don't have any zeros in between, so this proves the result. Then by previous arguments y1 will have a जीरो। जीरो होने का मीनिंग है फंक्शन जिस पे जीरो बन जाए, इसको रूट भी बोलते हैं, जीरो इन x3 x4, and which contradicts the fact that y1 has two, or you can say which contradicts the fact that x1 and x2 are two zeros of y1. So this completes the proof. Therefore, y2 has at most one zero in between two zeros of y1. This complete the proof, and इसको हम, this behavior is also called oscillatory behavior. Oscillatory behavior of solutions. ठीक है, एक फंक्शन मतलब ऐसे चेंज हो रहा है, जीरोज हैं, सो वी से दैट फंक्शन हैज ऑसिलेटरी बिहेवियर. So this is remark first. For example, if you can apply on this example, let us say apply separation theorem on and comment. So I am, for the simplicity, I am taking constant coefficients. So if you look at first equation, so solutions क्या हैं इसके? Solutions are sin x and cos x, and between two zeros of one solution, say sin x, for example sin x has many roots, so I am taking two roots. Let us take 0 and pi. So there is exactly, अब साइन की दो रूट हैं 0 और पाई, उसके बीच में कॉस का कौन सा रूट होगा? पाई बाई 2. So there is exactly one
0 of cos x, and which is pi by 2. And second point is also important. Uh, Second equation we have y double prime minus y equals to 0. अब इसके solutions क्या होंगे? E power x and y2 equal to e power minus x. So can you apply separation theorem on these two functions? देखो theorem does not say about existence of zeros. It only says that if one function has two zero, then another function will have one zero. At, but y1 and y2 don't have any zeros, so you cannot apply separation theorem on second example. So the separation theorem does not provide existence of zeros. So none of these two, none of them have zeros. Okay, so if function has zeros, then you can say another function will have zero. But if one solution is not vanishing, you don't have any zeros, then you cannot apply separation theorem, as this theorem does not provide existence. Now I am going to write another form of equation, that is called normal form. This is also known as first derivative free form. So this is also known as first derivative free form of differential equation. So sometime it is convenient to write the equations in this compact form, which contain only second derivative plus some coefficient y equals to 0. So in other words, you can convert any second order equation of this form. Let us write this. So we can convert this form into derivative free form. So for this so this is just a transformation. We assume that y equal to uv. Then write first derivative. Then write second derivative. Okay, just differentiate it. U and v, they are functions of x. Now substitute these derivative in equation. So we have y double prime plus v y prime plus q of y equals to u v double prime plus u prime v prime plus u double prime v. This is y double dash plus p times first derivative plus q times y equals to 0. So just do some manipulation. Okay, write this equation. U सेकंड डेरिवेटिव u लिख लो, उसके साथ क्या आएगा? सेकंड डेरिवेटिव u के साथ v आएगा. किसी एक को लिख लो, u को या v को. You can write any. सेकंड डेरिवेटिव ऑफ u लिख रहा हूं मैं. फिर फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ क्या आएगा? फर्स्ट डेरिवेटिव u this one and pv. Okay.
और u और v में सिमेट्री है, सो आप किसी को लिख सकते हो. देन टर्म कंटेनिंग ओनली u. सो यहाँ पे मैं इसको बना रहा हूँ डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव फ्री. सो आई वांट टू डिस्कार्ड दिस टर्म. Then resulting equation will have only second derivative of u, then first derivative. और यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा, आप देखोगे कि ये v में है 2v dash plus pv, this is equals to 0. So you can find v find करके यहाँ फिट कर दोगे. ओके. So we set coefficient of u dash equals to 0. So first derivative free. From this equation you can write v dash equals to minus pv by 2. On integrating v equals to ये dv by v कर लेना इसको, एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस 1/2 p dx. Okay, so resulting equation will be free from first derivative and v is given by this formula. Now I am going to write it again, given equation. Okay, clear है यहाँ तक? Now rewrite the given equation. So you have v u double prime plus v double prime plus p v prime plus q v u equals to 0. So now fit value here. Okay, so v double prime अब या तो अलग से वैल्यू निकाल लो, since you have written v equals to minus 1/2 p dx लिखा है मैंने. And if you go previous line, so v dash is minus pv by 2, और differentiate it, इसको differentiate करना तो v dash आ जाएगा minus pv by 2. Also write second derivative, यहाँ चाहिए ना second derivative, second derivative लिख लो, that is minus p dash by 2 v as it is, and then minus p by 2 v dash, और v dash को फिट कर दो आप minus pv by 2. So this will be p square by 4 हो जाएगा. v dash को फिट कर दो minus pv by 2, तो v इन दोनों से कॉमन आ जाएगा. So therefore given equation में v का वैल्यू फिट कर दो, v एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव. तो v u डबल प्राइम आपने ये फिट किया है माइनस p प्राइम बाई 2v प्लस p स्क्वायर बाई 4v प्लस p v डैश की वैल्यू फिट कर दो. सो p स्क्वायर बाई 2v प्लस q v इक्वल्स टू 0. तो v सबसे कॉमन आ रहा है, यू कैन v एक्सपोनेंशियल है, दिस इज नॉन जीरो, सो यू कैन डिवाइड विद v और यू कैन लीव v. सो फाइनल फॉर्म इज u डबल प्राइम प्लस q प्लस ये p square by 4v minus p square by 2. So this is minus p square by 4 and minus p dash by 2.
चेक कर लेना ठीक लिखा है मैंने। Okay, so this form is called normal form. So by fitting y equals to u times v, you can convert any second order equation in this form. Okay, and this form don't have any first derivative. And what is u? u कैसे निकालोगे? y इक्वल्स टू u v अज्यूम किया है आपने, और v क्या है आपका? एक्सपोनेंशियल -1/2 p dx. So you will make this transformation, और u क्या बन गया? और you can write u equals to y times e power 1/2 p dx. So by making this substitution in given equation, you can convert any second order equation into derivative free form. Any doubt in this stuff? Any doubt? No? This is a small exercise. Convert the equation this is 4 into normal form. Can you give it a try? Kindly note that this is not a standard form. So firstly try to convert this equation in standard form. So divide with the x square, or you can write this general equation. So there is a p constant. This is famous Bessel's equation. So in my notation, px is 1 by x and qx is x square minus p square by x square. So we make transformation y equals to uv with v equals to e power -1/2. अब p क्या हो गया? 1 by x, इंटीग्रल log आएगा, so 1 by √x. Can you complete it? Okay, try to complete it. And in next class we will explore more properties of the solutions of equations. Any doubt in this?
तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या करोगे इसमें? सो y इक्वल्स टू u 1 by अंडर रूट x और u इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। फिर आप इक्वेशन लिख दो, u डबल प्राइम बस u ही बताना है आपने, q फिर माइनस पी स्क्र बाई 4 पी स्क्र बाई 4 पी स्क्र 1 बाई एक्स स्क्र और फिर क्या चाहिए आपको? माइनस पी डैश बाई 2 माइनस 1 बाई 2 एक्स स्क्र। सो दिस इज माई फॉर्म। ठीक है, सो टर्म को कलेक्ट कर लेना। सो दैट इज योर फाइनल आंसर। सिर्फ आपने ये बताना है कि u क्या होगा। u ऊपर बता दिया मैंने, अंडर रूट एक्स वाई। सो इफ यू राइट इट in more compact form, so this is uh, you can collect all terms. So I think this is 1 plus 1 minus 4 p square by 4x square u equals to 0. So this is the normal form. Okay, normal form यही है, just fit q p dash coefficient. But when you write normal form, just let us know that what is u. तो u आपने पिक करना है, u कहाँ से आएगा? y इक्वल टू u v, v से आएगा। एंड v क्या है? v is exponential minus 1 by 2 p dx. So by making this transformation u equal to under root xy, you can convert the given equation into normal form. Okay, so I'll stop now. We will continue tomorrow.